Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, today's our fifth lecture, and today we just only talk about dimensions. Dimensions, according to the definition, the dimension of physical quantity is defined as the power to which the fundamental quantities are raised in order to represent that quantity. The seven fundamental quantities are enclosed in a square bracket to represent its dimension. यानी कि in simple word we can say that dimension is the representation of the nature of physical quantities. यानी कि dimension किसी भी physical quantity की nature को represent करने के तरीकेकार का नाम है. Now introduction to dimension of physical quantities. The nature of physical quantity is described by the nature of its dimension. यानी वही बात कि physical quantity की nature को describe किया जाता है उसकी dimension से. When we observe an object, the first thing we notice is the dimension. किसी भी चीज को अगर आप observe करते हैं तो सबसे पहले उस object की उस physical quantity की dimension को observe करते हैं. In fact, we are also defined or observed with respect to our dimension, that is height, weight, amount of flesh, etc. यानी कि ये बात क्लियर है कि जब भी हम अपने आप को डिफाइन करते हैं या अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो हम भी अपनी डायमेंशन से अपने आप को पहचानते हैं. यानी कि हमारी हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, हमारे हाथ पांव किस तरह के हैं, हमारा फेस कैसा है, ये तमाम की तमाम चीजें डायमेंशंस होती हैं हमारी बॉडी की या हमारी ये कहते हैं प्रेजेंस की. The dimension of a body means how it is relatable in term of base quantity. अगर फिजिकल क्वांटिटी या फिजिक्स के लिहाज से हम बात करें तो डायमेंशंस का मतलब है कि कितना हम बेस क्वांटिटी के साथ रिलेट करते हैं. यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बेस क्वांटिटीज ऐड होके वो फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हुई है, यानी कि वो ड्राइव क्वांटिटी जनरेट हुई है. When we define the dimension of a quantity, we generally define its identity and existence. It becomes clear that everything in the universe has dimension, thereby it has presence. Rules for writing dimension of physical quantities. Some rules which we follow to write dimension of physical quantities which are given below. Dimension are always enclosed in square brackets. Dimensions को हमेशा square brackets के अंदर लिखा जाता है. If the body is independent of any fundamental quantity, we take its power to be zero. अगर आपके पास quantity किसी भी fundamental quantity से independent है तो वहाँ उसकी power zero ली जाएगी. When the dimensions are simplified, we put all fundamental quantities with their respective power in single bracket. For example, as in velocity, we write LT-1 as LT-1. यानी कि जब आप सॉल्व कर लेंगे तमाम डायमेंशन को तो उसे एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसा कि LT-1 वेलोसिटी के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है. सॉल्व होने के बाद इसे हम एक साथ लिखेंगे LT-1 करके. We always try to get drive quantities in term of fundamental quantities while writing a dimension. हम हमेशा ड्राइव क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म के अंदर डायमेंशंस में लिखने की कोशिश करते हैं. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आर यूज्ड व्हाइल राइटिंग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सो बेसिक रिक्वायरमेंट इज मस्ट थिंग. एक्सपोनेंशियल लॉज हमारे पास लाजमी तौर पे यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे जब भी आप डायमेंशंस को फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को यहाँ लिखेंगे, और उसका खास ख्याल रखना पड़ता है हमें. इफ द डायमेंशन इज रिटन एज it is, we take its power to be 1, which is an understood thing. अगर कोई डायमेंशन एज इट इज लिखी हुई है तो हम उसकी पावर 1 कंसीडर करेंगे और ये एक अंडरस्टूड सी बात है. Plane angle and solid angle are dimensionless quantities. That is, they are independent of fundamental quantities. जो एंगल्स होते हैं आपके पास, चाहे वो प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, यानी कि थीटा, रेडियंस और स्टेरेडियंस, इन दोनों यूनिट्स का डायमेंशन नहीं होती. ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है. इस वजह से ये इंडिपेंडेंट होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से. नाउ डायमेंशन टेबल.
एक छोटा सा टेबल आपके सामने ड्रॉ किया गया है जिसमें आपके पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस गिवन है. Velocity, displacement upon time lt minus 1, acceleration, velocity upon time lt minus 2, work done, force into displacement ml square t minus 2, pressure, force per unit area ml minus 1 t minus 2, power, work done over time ml square t minus 3, density, mass per unit volume ml minus 3 t power 0, area, length into breadth, which is equals to L square in dimensions. Here we solve two examples by which we will understand that how we can write a dimension of physical quantity. Our first example is speed of an object is distance covered by in a specific time and is given by speed is equals to distance per unit time or displacement upon time. Dimension of distance is L. Dimension of time is t. Dimension of speed will be L over t, or speed is equals to Lt minus 1 or Lt minus 1, or we can write speed also m power 0 Lt minus 1. Second example, density of a body is defined as mass per unit volume and its dimension are given as density is equals to mass per unit volume, dimension of mass m, dimension of volume L cube, dimension of density will be m divided by L cube, or we can write it ml minus 3 or ml minus 3 t power 0. Dimensions are also used to derive the formula for physical quantity. Here we solve an important example by which we derive the formula for the time period of simple pendulum. Deduce the relation for time period of simple pendulum. Time period of simple pendulum possibly depends upon length of pendulum, mass of the bob, acceleration due to gravity, and angular displacement theta. Suppose t is the time period of simple pendulum, g is the acceleration due to gravity, L is the length of pendulum, theta angle with mean position. Suppose t is directly proportional to some power of g, L and m. T is directly proportional to L power A, G power B and M power C. T is equals to constant L power A, G power B and M power C. यानी कि हम यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट आ गया और बाकी तो हम वैल्यू एज इट इज रही और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. नाउ राइटिंग डायमेंशन इन अबव इक्वेशन. अब अबव इक्वेशन की डायमेंशंस अगर हम राइट करें तो t की डायमेंशन m स्क्वायर l स्क्वायर t इज इक्वल टू लेंथ की डायमेंशन l पावर a, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की डायमेंशन l t माइनस 2 पावर b और मास की डायमेंशन कैपिटल M पावर c जो कि गिवन है इस सपोजिशन में जो हमने सपोज किया है. m स्क्वायर l स्क्वायर t इज इक्वल टू l a पावर a प्लस b t माइनस 2b एंड m पावर c. हमने जब कंबाइन किया तो कंबाइन करने पे हमें पता चला कि जब दो l मौजूद हैं, एक की पावर a है एक की पावर b, तो हमने एक ही l यूज किया और a और b को ऐड कर दिया. t माइनस 2b माइनस 2 पावर थी t की, वो b से ब्रैकेट के बाहर जब b पावर उससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2b हो गया. m आपके पास एज इट इज रहा विद पावर c. कंपेयरिंग द पावर्स को अगर कंपेयर करें m की पावर को m से लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर, l की पावर को l से और t की पावर को t से. Here m की पावर c which is equals to 0, l की पावर a plus b which is equals to 0 in other side, and we get a is equals to minus b, t की पावर minus 2b which is equals to 1 on other side. So
b इज इक्वल टू -1/2 और a की पावर अगर b की वैल्यू को अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी a is equals to 1/2. Now putting values of a, b, c in equation 1. Equation 1 में a की, b की और c की वैल्यू को पुट करें. So we get t is equals to constant l की पावर हाफ, g की पावर -1/2 और m जो है उसकी पावर c थी, पावर m की 0 है. 0 का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो m आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा. So we get final result which is t is equals to constant radical l over g. हाफ का मतलब है पावर हाफ इक्वल्स टू रेडिकल, सो l पावर हाफ l, g पावर माइनस हाफ अपॉन g रेडिकल. तो इसको एक साथ हमने लिख दिया t is equals to constant multiply by radical l over g where the value of k found to be 2 pi. और यहाँ पे जब कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वो आपके पास आती है 2 पाई. तो इस सूरत में आपके पास जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है t is equals to 2 pi radical l over g. Now students, here is your homework for today. Find the dimensions of the following physical quantities: force, momentum, angular momentum, weight, kinetic energy and potential energy, and Vf is equals to Vi plus At. Thank you students. If you feel any problem, you can ask me on my WhatsApp and in Google Classroom or through email. Thank you again.